Hello students, today's topic is determinants of deadweight loss. What determines whether the deadweight loss from a tax is large or small? The answer is the price elasticities of supply and demand, which measure how much the quantity supplied and quantity demanded respond to changes in the price. Let's consider first how the elasticity of supply affects the size of the deadweight loss. So as you can see in these two panels, in panel A and in panel B, the demand curve and the size of the tax are the same. तो अगर हम दोनों panels में देखें, panel 1 है आपका inelastic supply, that basically price में change आने की वजह से supply में ज़्यादा change नहीं आया. Okay, supply is not much responsive to the change in price. That is the inelastic supply. Okay, and panel B is elastic supply. That supply is too much responsive to the change in price. So in these two panels, we can see that demand curve is same. Demand curve is same and size of the tax is also same. The size of the tax is also same. But the price elasticity of supply is different. Notice that more elastic the supply curve, the larger the deadweight loss of a tax. अब आप देख सकते हो दोनों ही केसेस में डिमांड कर्व सेम है, साइज ऑफ द टैक्स भी सेम है. ठीक है, बट अगर हम देखें इलास्टिक सप्लाई का केस, द मोर इलास्टिक द सप्लाई इज द ग्रेटर इज द डेडवेट लॉस. उतना ज़्यादा डेडवेट लॉस है. और यहाँ पर हम इनइलास्टिक सप्लाई की बात कर रहे हैं. इनइलास्टिक सप्लाई के केस में देयर इज smaller deadweight loss. So when the supply is relatively inelastic, the deadweight loss of a tax is small, and when supply is relatively elastic, the deadweight loss of a tax is large. Clear? Now let's see how the elasticity of demand affects the size of the deadweight loss. So as you can see in these two panels, in panel C and in panel D, the supply curve and the size of the tax are same. तो अब अगर हम दोनों पैनल्स में देखें, जो हमारा ये सप्लाई कर्व है, इट इज सेम इन बोथ द पैनल्स एंड साइज ऑफ द टैक्स इज ऑल्सो सेम. ठीक है, बट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट. लेकिन जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो डिफरेंट है. फर्स्ट केस में क्या है, इन इलास्टिक डिमांड, दैट डिमांड इज नॉट मच रिस्पॉन्सिव टू द चेंज इन प्राइस. प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आया. एंड this panel D shows elastic demand, that demand is too much responsive to the change in price, कि प्राइस में थोड़े से चेंज की वजह से डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आया. दैट इज इलास्टिक डिमांड. ठीक है, नाउ नोटिस दैट मोर इलास्टिक द डिमांड कर्व, द लार्जर द डेडवेट लॉस ऑफ अ टैक्स. तो अगर हम देखें यहाँ पर, दैट व्हेन डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक, द डेडवेट लॉस ऑफ अ टैक्स इज लार्ज. जब डिमांड जो है वो इलास्टिक है, इन दैट सिचुएशन डेडवेट लॉस क्या है, लार्ज है. And when demand is relatively inelastic, the deadweight loss of a tax is small. तो यहाँ पे deadweight loss जो है वो small है. Okay. A tax has a deadweight loss because it induces buyers and sellers to change their behavior. The tax raises the price paid by the buyer so they consume less. At the same time, the tax lowers the price received by the sellers so they produce less. And because of these changes in behavior, the size of the market shrinks below the optimum. तो जब टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, then it raises the price paid by the buyers, so they consume less. At the same time, the tax lowers the price received by seller, so they produce less. And because of these changes, because when the consumers are consuming less, producers are producing less, then the size of the market will shrink below the optimum, will fall below the optimum. Now, elasticity of supply and demand measure how much seller and buyer respond to the change in price.
and therefore they determine how much the tax distort the market outcome. Hence, greater the elasticity of supply and demand, the greater will be the deadweight loss of a tax. बात सही है. अगर मैं conclusion पे यहाँ पे आऊँ, if I am considering this case, greater the elasticity of supply and demand, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब टैक्स लगेगा, when the tax will be enacted by the government, in that case, price paid by the buyer rises, right? And price received by the seller will decrease. But because the elasticity of supply and demand is greater, that means consumption will decrease by larger amount, right? Because price का जो है consumption पे impact वो ज़्यादा रहेगा because of higher elasticity of demand. In the same manner, the production by the producer will decrease by larger amount because of higher elasticity of सप्लाई. तो जो इसका जो इम्पैक्ट है, ये जो प्राइस में जो चेंज आ रहा है, इसका इम्पैक्ट जो है कंजम्पशन और प्रोडक्शन के ऊपर वो ज्यादा रहेगा बिकॉज ऑफ हायर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. एंड इन दिस सिचुएशन द market will shrink below optimum. मार्केट तो श्रिंक होगी बिकॉज कंज्यूमर कंजम्पशन लेस कर रहा है और जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन लेस कर रहा है, राइट? मार्केट श्रिंक होगी बट बाय लार्जर अमाउंट बिकॉज देयर इज अ लार्जर इम्पैक्ट ऑन बोथ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन. So the greater will be the deadweight loss of a tax. Clear? और ऐसे इसका ऑपोजिट केस बनेगा, लोअर द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड का केस. ठीक है, थैंक यू.